Hello everyone and welcome to an all new vlog from this beautiful village of Uttarakhand. This village is around 30 to 40 kilometers from Nainital and this place is known as Ramgarh. You can reach here in around 1 or 1.5 hours from Nainital. तो ये है रामगढ़ की सुबह का नज़ारा। हम अभी बाहर आए हैं हमारे होटल से। I'll show you my hotel in some time and the room tour also, so stay tuned. This view is amazing. नैनीताल से only 30-40 किलोमीटर्स आगे इतनी प्यारी जगह मिल सकती है. Maximum of the public goes to Nainital while you can reach here and enjoy this place. This is surreal. चाय नाश्ता करने के बाद अब हम वापस से जा रहे हैं अपने होटल की तरफ एंड दिस प्लेस इज़ द पार्किंग ऑफ द होटल. आपको यहीं पे अपनी गाड़ी रखनी पड़ती है एंड अपोजिट टू दिस इज़ दिस ब्यूटीफुल व्यू. मतलब हर जगह ही चारों तरफ पहाड़ हैं, चारों तरफ आपको वैली नज़र आएगी. इट्स ब्यूटीफुल. चलो आगे चलते हैं और आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं. सो ये एक नैरो पैसेज है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है. यहाँ पे गांव के लोग रहते हैं तो यहाँ थोड़ी गायें वगैरह भी हैं. वेरी क्यूट. तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं पर यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर हैं दैट यू डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन एनी व्यू. जस्ट लुक एट इट. यहाँ से वैली इतनी सुंदर दिख रही है. पूरा जो बेस है माउंटेन्स का अपन वहाँ तक बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं. इट्स वेरी प्रिटी. एंड while we are seeing the view हम पहुँच गए हैं हमारे होटल के एंट्रेंस पे which is Seclude Ramgarh. Yes, तो हम रुके हैं अभी Cliff Edge Seclude Ramgarh में एंड ये उसका एंट्री है. यहाँ पे उन्होंने अलग अलग रूम्स बनाए हैं ऊपर नीचे. तो जिनको अगर नी में प्रॉब्लम है, जो ऊपर नीचे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो वो यहाँ पे उनको दिक्कत हो सकती है आने जाने में. अदरवाइज दिस प्लेस इज़ अमेजिंग. मैं आपको पहले एक बार बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि बाहर यहाँ पे छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट है ये जो इन्होंने बनाया. एंड यहाँ अपन देखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स, डेकोरेशन, प्लांट्स बहुत प्यारे हैं. तो यस, दिस इज़ अमेजिंग. एंड उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे रूम की तरफ. तो हमने यहाँ पे 2 रूम बुक किए थे. एक ऊपर है और एक नीचे की तरफ है. सो नाउ लेट्स गो एंड शो यू द फर्स्ट रूम. If you have come to our channel for the first time and if you are liking it so far, why don't you go and subscribe to our channel, and it will mean a lot to us and help us grow and keep us motivated to post such content. And yes, so this is our room downstairs जिसके आगे इतना बड़ा open area है और you can call it as terrace और balcony और open area. It's a beautiful property and very green. So as you can see behind me, this is our room and this is our bed. There is a beautiful painting here. Yeah, kept our luggage here. There's table, and you can see the furniture is all in wooden. Furniture is in wooden, and even the top lightings. I'll show you this lighting and all in the night as well. But this is a very beautiful place. It's a huge room, and there are these sitting arrangements here. And after this, we'll head towards the washroom and show you the washroom as well. So this is the washroom. It's a very raw vibe because of these stones here, and it's a pretty decent washroom. Nice. There's again this beautiful wooden lighting and everything here. This even the sink bottom is wooden. आपको यहाँ पे ये कॉपर की बाल्टी और लोटा मिलेगा नहाने के लिए, which is again a very beautiful and unique thing. Now let's go outside. So here we do not have TV, we have a projector and a white screen here. So if you want to see something, you can directly
have the Tata Sky connection, and you can see it project here. There is also a good speaker here on the side. We'll check it once and we'll shoot it again. And the main part is this beautiful view that we see from our room. All mountains around. This is completely mirror on one side. And let's go outside to this balcony. There are all stones here. अगर आप देखोगे नीचे पूरी concrete रखी है. It's really beautiful. The sun has risen from this side, so the mountains are looking really fresh, and there is a little bit of sunlight also, so it's looking very pretty. So this is our room, and this is the same view that we get from the room. You can also have a bonfire here, but it is charged over the top of your room charges. And there are different setups for settings, so yeah, it's a very beautiful property, and thumbs up to this. This is the evening view of our room, and the lights are on. It looks stunning. It's very gorgeous lights, and yeah, so the services were also great. The food was also decent, so it's a good place. You can plan your staycation here. So this was all about our room. Heading towards a trek, and हम जा रहे हैं नीचे की तरफ. एक नदी है, तो नदी का नाम एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, तो आई जस्ट कंफर्म विद द लोकल्स जब हम नीचे पहुंच जाते हैं, एंड आई लेट यू नो. बट हाँ, रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ. थोड़ा सा ऊंचा नीचा रास्ता है, छोटा सा. अगर आपको नदी दिख रही है बीच में, अगर यहाँ ये छोटी सी जो नदी दिख रही है, हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं. हम इतने ऊपर हैं, एंड नीचे जाके विल शो. With this, I'm ending this vlog here. So ये trekking and हमारा trekking का experience कैसा रहा, and another room that I was talking about that was on the height. So उस room का tour अभी बाकी है, which will be coming in the next video. And till then, घूमते फिरते रहो, खुश रहो, and see you next time.